And this dua of Imam Ali alayhi salatu salam, this dua Kumayl, inshallah, will speak more about this dua. It teaches you and it activates within you and it codifies within you your connection with Allah subhanahu wa ta'ala through the Alavid paradigm. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for the life that He gave us, which is a blessing. But it is no ordinary life. It is a life that we spend in love and memory of Muhammad and al-Muhammad alayhi salatu salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. And that is a bigger blessing and a big ni'mah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward those who are in service of this maktab and this madhab and this household. The ʿAllāma, the salihin, the shuhada, the siddiqeen, the qurra, the writers, the reciters. Every act, as little as it may seem, in their household, for their service, is not a minor act, but it is rather a very major act. Sometimes you're not able to gauge the reward of what has happened or what, when a person comes up to recite, and he recites his dua or he recites his salam or marfiya, and in that instance, your heart connects to one of the ma'asumeen. It has not connected to the ma'asumeen, but it has connected to the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. Because these divine names and these divine individuals and these divine personalities don't exist in a realm that is familiar to us. We are insignificant in the order of creation. If you were to really look at creation and the purpose of creation, Allah says, I have created everyone, or I have created you to worship me. And we look at ourselves and we look around ourselves, we don't see people who are fit to worship except for Muhammad and al-Muhammad alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. So it was enough for Allah to have been present and created Rasulullah and al-Rasul, and the philosophy or the purpose of creation would have been complete. But it is the lutf of Muhammad al-Mustafa that we are in creation now. It is through his noor that we exist.
Otherwise nothing would exist. It was very enough for Allah. One sajda from Rasulullah was kafi for the purpose of creation. फ़लसफ़े ख़िलक़त तमाम हो जाता है यहाँ पे. एक सजदा रसूलुल्लाह को काफ़ी था अल्लाह के लिए. बड़ी बात कह दी है. वाह वाह वाह. ये तो उनके वजूद का लुत्फ़ है कि ये सब कायनात सजी हुई है. इसमें हमारा कोई कमाल. It is nothing of our doing. It is nothing of our happening. We should not feel such. As I had mentioned last week, that for the next few weeks or so, we'll be speaking about Dua al-Kumayl and the fadila of Dua al-Kumayl. And that is the reason I started with this ayah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Because Imam Ali starts with the dua which says, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. ए अल्लाह, तुम्हें उस रहमत का वास्ता कि जिसने तमाम चीज़ों को घेरे हुए लिया है. This is what Imam Ali says, and the Quran says, Oh Rasulullah, you are the Rahman. Imam Ali says कि अल्लाह तुझे मोहम्मद का वास्ता कि जिसने तमाम चीज़ों को घेरे में लिया हुआ है. सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु. The love Imam Ali has for Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi and the love Rasulullah has for Imam Ali, we cannot talk about, we cannot discuss, we cannot gauge, we don't know the extent of it. It is, how do I say it where it is not rude? How do I say it when it is not offensive? It is crude, it is vulgar, it is foolish to learn of Muhammad from anyone except for Ali. Nobody has the Muhammad that you're looking for, the Muhammad that Allah has designated for each and every one of us. We do not have access to that Muhammad except for that one door, Ali ibn Abi Talib. Sometimes many things we hear in history, many things are mentioned in history, on the manabir in the books, but because of our distance from our mutali'a or readings, learnings, we find ourselves a little removed from them. Imam Ali is the same one when he was 2 years old. Imam Ali ibn Abi Talib is 2 years old. Rasulullah would carry him in the valleys of Makkah when Imam Ali is 2 years old, and he would say, Hada wasiyyi, this is my wasi. Wa zawju ibnati, and he is the husband of my daughter. Kisne pucha nahi, which daughter, Muhammad? When Imam Ali was 2 years old, Rasulullah would carry him. Or you find this in the books of the ʿAllāma. And this is not from our ahadith. Like many things are inserted into our hikmah, but did not belong to us. They say, why did Ali live with Rasulullah? Because, you'll find this in the books of the Ahl Sunnah. Because it was difficult for Abu Talib to manage so many children. So Rasulullah said, why Uncle Abu Talib, give me one of your children so the financial burden becomes less. जब पूरा अरब भूखा मर रहा था, तो जिस शेप में लोग गए थे, उस शेप का नाम क्या था? They said we took Ali because Abu Talib was not financially able to feed Ali. And when all of Arabia boycotted Rasulullah, where did Rasulullah go and find peace? In the sanctuary of Shi'i Abi Talib alayhi salatu. All the Muslims were present where? In the Shi'i Abi Talib. That belonged to Abu Talib. He's the one that feeds. He's the one that feeds. And another thing is, like ḥalīma Sa'diyya, we have this riwayat. We don't have it, the Ahl Sunnah have it. Rasulullah, when he was young, they took him to the desert. They gave him to this woman called ḥalīma Sa'diyya, who became the mother of Rasulullah. When you read the Quran, if you read the Quran, why did Musa and how did Musa meet his mother again? Because Asiya was sitting there and wondering, why is this child not taking from any woman?
Why would this child not feed off the milk of any other woman? You understand, ismat, Ma'soom has a standard and a benchmark. The Ma'soom has a standard and a benchmark. It won't take from anyone else. It won't take from anyone else. We, as the lovers of the Ahlul Bayt, we, as the followers of the Ahlul Bayt, we, as the servants, inshallah, of the Ahlul Bayt, should always consider ourselves outside the household, because their respect is something else, so we cannot speak in the internal affairs of the household. But I will ask you this question. Do you know how Imam al-Hussein was fed when he was young? But when you are in this world, अब दुनिया में बच्चा आया है तो खाएगा पिएगा तो सही, चाहे वो नूर का ही क्यों ना बना हो, अब जब यहाँ पे है खाकी दुनिया में, so the child needs to feed and eat and drink. The Imams would drink and eat. So Imam Hussein, do you know how Imam al-Hussein was fed when he was young, when he was born? Rasulullah would come home many times every single day. He would put his finger in Imam Hussein's mouth. He would put his tongue into Imam Hussein's mouth. This was the internal intent. This was the initial feed for Imam Hussein. Husaynun minni. Hussein has fed off me. Of who? Of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And this has been the seerah of the Ahlul Bayt. So if you have the Ahlul Bayt who are waiting for Rasulullah or another hujjah of Allah, so they can eat from this world, the Sayyidul Rusul, the father of Zahra, will go to some other person and take his nourishment from another person. This is ghair ma'qul. You won't accept this from Musa, but you expect this from Rasulullah, because you've taken Rasulullah from everybody else except for Ali. Had you taken Rasulullah from Imam Ali and the family of Imam Ali alayhi salatu wasalam, you'd understand what is the Rasul in the books and what is the Rasul who's the father of Zahra salamullahi alayha. Sallu ala Nabi Rasulullah Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa ajil farajahum. First, we identify what our source is, where we take our knowledge from, who do we acquire from, whose door we sit at. The Quran will teach us, the Ahlul Bayt will teach us, the Aql will tell us, the teachers and the philosophers will tell us. فَلْيَنْظُرِ الْمَرْءُ إِلَى طَعَامِهِ. A man, when he eats, should see his food where it comes from. Ta'am is not only material. Ta'am is not food in your plate. Ta'am is what you're listening to. Ta'am is what you're looking at. Ta'am is what you feed your soul. You have to be careful where it comes from. If it does not come from the door of the Ahlul Bayt, it is a creation of one's imagination. Mujhe aisa lagta hai. I think, therefore it should be the case. If your intellect was capable to connect to the heavens, there would be no need for Anbiya to come down from the heavens. The uqul, the intellect, is qasir. The intellect is disabled. It has a handicap. It cannot exist beyond a realm. It cannot traverse. The intellect cannot traverse. It cannot go beyond levels. थोड़ी सी मैं फ़लसफ़ी बात करूँगा, little philosophical talk. आलम malakut, there's an alam jabarut where we are. There's alam malakut where the angels are. There's jabarut, nasut, hahut, lahut, and all those maqamat. They say the aql salim is made of nur. And the malaika are made of nur, and the Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam are made from nur. But there's a difference in the anwar. The malaika and the uqul are from the same nur, and this nur is taken from the nur of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. If your intellect, if your aql was to
process at 100%, the highest level of your human intellect will not go beyond Jibreel. The height of your intellect will not exceed Jibreel, because you are made from the same madda, you're made from the same material, the same type of nur. There will come a time where Jibreel say, Ya Rasulullah, I cannot go beyond this point. If I was to go beyond this point, mere par jal jayenge. My wings will set fire. I cannot go beyond this point. This is only for you and yours. This is for you and yours. So a person should understand the limitations of the intellect, how far the intellect can traverse, and then gauge this understanding. That is why we realize our pettiness, how small we are, how insignificant we are, and how much we need the Ahlul Bayt alayhimu salatu wasalam. जिस शख्स को अपने मरज़ की संगीनी का अंदाज़ा हो जाता है, वो बेताबों की तरह डॉक्टर की तलाश करता है. The one who understands how insignificant he is will really then appreciate the value of Muhammad and al-Muhammad alayhi salatu wasalam. But the someone who thinks that nahi sab kuch aata hai, we know everything, but he's not going to chase, and he will die in that ignorance. There's two types of jahl, fundamentally. One is jahil, adi, normal adi. One is jahil murakkab. One person is jahil, ignorant, and he knows he's ignorant. I don't know where Belfast is. मैं कभी गया नहीं हूँ. I just know it's up north. Where exactly it is, I don't know. Belfast. ये जहल है. जहल मुरक्कब ये है, I don't even know it exists. कभी नाम नहीं सुना, पता नहीं है. It's like a person, खुदा आप सबको लंबी उम्र दे, अल्लाह आपके मरीज़ों को शिफायाब करे. It's like someone who has cancer and does not know he has cancer. This is jahl murakkab. The first one is he does not know and he knows he does not know. The second one does not know, he does not even know he does not know. जो अहले बैत के दरवाजे पे आके बैठते हैं उसको पता चलता है कि मुझे नहीं पता. And the one who leaves the door of the अहले बैत पे अपने नाम के आगे लगाते हैं मुफ्ती, फिर 4 मकतब खुलते हैं, फिर वो इमाम मकतब बनते हैं. सलवात भेज दो मोहम्मद वाले मोहम्मद. Sitting at the door of the Ahlul Bayt will give us the humility, because you will not find more humble beings than the Ahlul Bayt alayhimu salatu wasalam. And exclude the divine aspect, exclude the spiritual aspect, exclude वो जो फ़ज़ाइल है ना रसूलुल्लाह के, वो जो फ़ज़ाइल हैं अहले बैत के, anything that remove all of that on a simple fundamental ground basis. Just what me and you can relate. If somebody is given a position of power or authority, you want to call him 100 times, he won't respond to you. You want him to do something, he won't, even if he can do it. This is the nature of power. Power corrupts. Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. This is the nature of human beings. But power does not corrupt the Ahlul Bayt, because they are the source of power. And they give power. And because of them, power exists in this realm. Without them, there is no power. There is no. जिसको लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, is fooling himself. Imam As-Sajjad alayhi salatu wasalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, has proved it in that incident when they handcuffed him and they put chains around his arms and his hands, and they rejoiced and celebrated, and they said, now we have you as a captive. The Imam looked at him and the Imam smiled, and he moved his hand and the chains fell to the ground, and the Imam made another signal and the chains came back. He says, we're not captives of you. हम तुम्हारे captive नहीं हैं. This is the Mashiach of Allah. This is between us and Allah. This does not involve you. इसमें तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है, तुम खामखा इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हो.
इससे कुरान कोई ताल्लुक़ नहीं है. You're not a part of this equation. Do not force yourself into this equation. You don't belong here. ये हमारा और हमारे रब का ताल्लुक़ है. तुम किसी गिनती में नहीं आती. You're not part of the equation. You don't even belong here. This is not your space. You think you do something and you think it will affect us. This is beyond you. This is below you. This is not for you. हमारा और हमारा रब का ताल्लुक़ है. So on this realm they exist. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Imam Ali starts the dua, "Oh Allah, I ask you bi rahmatika allati," your rahmah that has enveloped everywhere, and the ayah says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. You, Rasulullah, are the rahmatul lil alamin. Imam Ali starts here. Imam Ali starts here. When Allah wanted to test Tawheed, what is Tawheed? Allah is one, Allah is the Khaliq, Allah has all these sifat. This is Tawheed. And nobody except for Allah subhanahu wa ta'ala has this power independently. The muwahid, the one who believes in Tawheed, believes that Allah has the power independently, and anybody who has this power, if Allah gives it to them, is dependent on Allah subhanahu wa ta'ala for this power. This is Tawheed. Allah wants to test Tawheed. Allah will not do it by himself. अपनी ज़ात पर रख कर अल्लाह तौहीद का इम्तिहान नहीं लेता. अल्लाह एक नबी को खाक से खल्क करता है, फिर कहता है इसको सजदा करो. Allah wants to test Tawheed. He won't do it directly. He will create Adam and then ask everybody to make sajda towards Adam. Tawheed का इम्तिहान नबूवत के ज़रिए लिया जाता है. नबूवत का इम्तिहान किसके ज़रिए लेना चाहिए? जो अली को नहीं मानता वो नबी को नहीं मानता. मैं नहीं कह रहा, अल्लाह की सुन्नत है. ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह की सुन्नत है, सुन्नत इलाही. This is Allah's sunnah. If Allah wants to test Tawheed, He will test it through Nubuwah. And if Allah wants to test your faith towards Nubuwah, your iman on Nubuwah, your belief towards Nubuwah, He will test you through Imamah. एक बात कहूँ, जितना वो दिन था ना जब अल्लाह ने आदम को खल्क किया था, तौहीद का इम्तिहान था, उसके बराबर ने अल्लाह ने गदीर को लाके रखा है. अल्लाह ने बिल्कुल बराबर आके रखा है गदीर को. अल्लाह ने सिलसिला इस तरह जोड़ रखा है, इसलिए जितना ऊंचा मिंबर बन सकता था उतना ऊंचा मिंबर बनाया. फिर साहिब मिंबर, और फिर जब मिंबर पे रसूलुल्लाह लेके आए, जितना अल्लाह के रसूल इमाम अली को ज़ाहिरी दुनिया में बुलंद कर सकते थे, इतना बुलंद किया कि मौला के पाँव जो हैं रसूलुल्लाह के ज़ानों से टकरा रहे थे, दोनों हाथों पे इस तरह से बुलंद किया. There is no tawheed without wilayah of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. There is no tawheed. And I think I've mentioned this here or somewhere else. भी मसला एक हो जाता है. When you tell your child, जब अपने बच्चे से कहते हैं, when you tell your child, बेटा become a godly son, go look for Allah, जाओ बेटा खुदा को ढूंढो. When you tell your son, बेटा go look for Allah, oh my son, go look for Allah, yeah, go look for your God. So someday he'll go to the mandir, then he'll go to the church, one day he'll go to the synagogue, one day he'll come to the masjid. Why? Because he's looking for God. फिर आप कहेंगे ये मामला गलत है. If he spends 40 years in पर्वत पे चला गया नेपाल में, तो मसला हो जाएगा, तो खुदा मुश्किल से मिलेगा इसको. फिर you make it easier for him. कहते हैं जाओ बेटा मोहम्मद को ढूंढो. You make the daira small for him कि बेटा go look for Rasulullah. उसमें भी एक मसला है. बहुत सारी मस्जिदें हैं, कहीं भी जा सकता है. उससे को खुदा वो ढूंढो जो मोहम्मद ने बताया हो, जिसको अली ने समझाया हो. अली वाला खुदा ढूंढो तो यहाँ आएगा. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद.
या अली या अली। तो तौहीद सभी वाली नहीं चाहिए, तौहीद अली वाली चाहिए। दिस इज द तौहीद वी वांट, दिस इज द तौहीद वी नीड, because where else will you find this? I want to repeat this incident for the children so they understand and relate. The reason the Ahlul Bayt stand head and shoulders above everybody else is because of their khas behavior and their khas karam. The incident goes, it is the season of Hajj. Imam al-Hasan al-Mujtaba alayhi salatu wasalam, ʿAllāma salli ala who's done more than 25 Hajj walking. The Imam would go bare feet towards the house of Allah subhanahu wa ta'ala. ये तो इमाम का लुत्फ़ और करम है। इमाम की ज़र्रा नवाजी है कि इमाम काबे के पास चले जाते हैं। इमाम की ज़र्रा नवाजी है कि इमाम काबे के पास चले जाते हैं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। 25 years, the Imam, more than that, has gone for Hajj. One of these journeys, the Imam, because this is Alam al-Asbab, because this is Alam al-Imkan, because this is this realm where the Imam exists. When the Imam is hungry, he will eat. When the Imam is thirsty, he will drink. So Imam was walking, उनके पाँव में वरम आ गया. His foot became swollen. Imam al-Hasan. So according to the riwayah, the riwayah says Abdullah bin Ja'far al-Tayyar, the husband of Bibi Zainab salamullah alayha, was with the Imam in the journey, and he says, Ya Imam, oh Imam Hassan, I've heard on the way there's a Habashi man, someone from Ethiopia. He has, in my words, he has a stall where he sells different ointments and different oils. So if you allow, I will go and I will buy from him this oil so you can use it. Inshallah, this will benefit you. I said, this is Hajj season. Ab pure saal to Haji nahi aate, they're not here all year. So you'll see all these people come out from different parts of Arabia bringing different things to sell. And Hajj season is a festival of sorts. Everyone is present. There's so many people coming. And they know you are a traveler, so they can ask you for any price they want. This is how normally capitalism marketing hoti hai. Jo bech raha hai, the one who's selling sells at the highest price possible, and the one buying wants to buy it at the lowest price possible. Jabki Shariat tells us these people who are selling, वो जो इलीगल बेचते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बट पीपल जो आप पाकिस्तान इंडिया में यू फाइंड देम, जो स्टॉल्स पे केले अमरूद जो सेलिंग फ्रूट्स वगैरह, उनसे ज़्यादा जरा और बहस मत किया करें. वो बेचारा खुद तो गरीब आदमी होता है, ही हिमसेल्फ इज़ अ पुअर मैन. उससे आप जो है ज़्यादा जरा करेंगे, लेकिन दुकान में जाके जहाँ फिक्स प्राइस होती है वहाँ पे बहस नहीं करते. जो करोड़पति अरबपति होता है, पर्सन हुज अ बिलियनर और मिलियनर, नोबडी आर्ग्यूज विद हिम कि भाई उस पर फिक्स प्राइस लिखिए. लेकिन जो बेचारा उसकी दिहाड़ी दिन की 50-100 रुपये है, उससे जरा करते हैं. ये शान मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वालों में नहीं है. दिस इज़ नॉट आवर थिंग. एनीवेज, so Imam Hassan says, yes, go to this person, go to this fellow who is of his cultural heritage. He's an Abyssinian, Habashi hai. Habashi, when he writes in context Habashi, it means कि पहले गुलाम था अब आज़ाद हो गया. सही है. Imam Hassan says, don't tell him, बताता नहीं, don't tell him who you're buying this ointment for. Tell him that you want it, and he says, do not argue with him, do not hackle with him. जो वो प्राइस कहे उतनी प्राइस में दे देना. Bring it back. He says, okay. He goes there, he meets this person who's selling the oil and ointment, and he says, I want this, and how much? तो कीमत बताता है.
And Hazrat Abdullah says, okay, here's the money, give me the oil. The riwayah says the person who's selling the oil, he stops and he pauses. And he says, where are you from? Kahan se aaye ho? He said, what is it to you? Take your money, give me the oil. You don't have anything to do with this. Where I've come from, who this oil is for. He says, no. Achha, the riwayah does not say, give any detail. The man looks at Abdullah bin Ja'far al-Tayyar and he asks him this question, where are you from? But this person must have 100 customers at least. He doesn't ask everybody, kahan se aaye ho, warna how will he do business? He must have noticed something in Abdullah bin Ja'far al-Tayyar which was different from the rest of his other customers and clients. Kuch to notice kiya hoga na? For the children, I'll ask. Bachche baite. Ab ye bachchon ko, they know this istilah. When you see a street man, you know what a street man is? And the way he talks, you know he belongs to the street. When you see someone with a posh accent, you know he does not belong to the street. Ye kisi achhe ghar se aaya hai. When you see someone carry himself a certain way, you know that this person is special. आप लोगों के dialect से, the way they're treating you, the way they're dealing with you, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन कहाँ से आया है. अबू तालिब के खून में कुछ तो तासीर होगी. Something special in the blood of Abu Talib alayhi salatu wasalam. That this man stops and he says, where are you from, Abdullah? अब he haggles and he haggles. इमाम हसन पहले बता चुके थे, देखो बताना नहीं इसको. तो अब्दुल्ला बिन जाफर says, I won't tell you, I'll take you. चलो साहब. तो इमाम की बात भी तो मानना था, बताना नहीं था. He takes him and he recognizes the Imam. An Abyssinian slave, a person from Abyssinia, from North Africa, brought down as a slave to Arabia. He looks at the Imam and he recognizes him without having met him before. Do you know why the Quran says the enemy of Allah and the enemy of Rasulullah and the enemy of the Ahlul Bayt is kal an'ami bal adal? They're worse than animals क्योंकि जानवर पहचानता है कि मेरा इमाम है. दुश्मन को नहीं एहतराम रहता. 1000 शेर लाके छोड़ दें, जब ये पहचान लेगा कि ये ज़हरा की आल है, तंग नहीं करते. लेकिन वो कैसे इंसान नुमा जानवर से बदतर लोग थे करबला. But this man, this Abyssinian man, he saw the Imam and he goes up to him and he says, I will not charge you for this ointment. I will not ask you for money for this ointment. But I have a request. What is the request? He says, when I left home, my wife was about to give birth. When I left home, my wife was about to give birth. Please pray that her time of difficulty becomes easy for her. You know what the response of Imam Hassan is? It says, Allah has given you a son. He is healthy and your wife is also healthy. He will live a long life. وَهُوَ مِنْ خُلَّةِ شِيعَتِنَا. और हमारे ख़ास शियों में से, he will be one of the selected Shi'as. You know what selected Shi'a means? ये हबशी गुलाम का बेटा, when the Imam says, मिसाल जो mindset है उनका, Imam says खुल्लतुन शिया, यानी what? यानी सलमान, यानी मिक़दाद, यानी मुग़दाद. सलावत भेज दो मोहम्मद वाले. The reason I brought this hadith is for the children to understand, especially the young ones who want to work and do business and have a job and do duty. If rizq was dependent of how many hours you put on the clock every day, then there's a misal amongst the ulama that the donkey would be the richest one.
जितनी मेहनत गधा करता है या कोई और जानवर करता है जो हल चलाता है, he must have had all the money. लेकिन रिस्क is not dependent on how many hours you put in, because risk is in his hand. इसने तेल कितना में बनाया होगा और कितना इसने बेचा होगा ये तेल, जो इसने अपनी नस्लों की आक़िबत ख़रीद ली वहाँ से. When dealing with shi'a, when dealing with fellow human beings, sometimes in dealings there might be some up and down. Azizan Muhtaram, I will say this in English and also in Urdu. कहेंगे मौलाना साहब खुद तो बिज़नेस करते नहीं, हमें जो है वो घाटे का सौदा करवाएंगे. सिर्फ ये कह के छोड़ देना कि इसके दिल में ज़हरा की मोहब्बत है. सरकार ये कहाँ कहाँ आपकी ज़िंदगी में काम आएगी ना, ये आपको ख़बर भी नहीं होगी, आपको ख़बर भी नहीं होगी. क्योंकि अब इक्वेशन में आपने एक ऐसी हस्ती को शामिल कर लिया जिसको इमाम कहते हैं, हम इमाम सब पर हुज्जत हैं, ये ज़हरा हम पर हुज्जत है. सलामुल्लाह अलैहा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम. Running around all hours is not what gives you rizq. Allah says, يَرْزُقْهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. We will give them rizq from places they haven't even accounted for. La yahtasib, they have not even accounted for. They don't know where this rizq is coming from. We will give them the rizq. We will provide them the rizq. This barakah comes from the love of Zahra and the love of the children of Zahra salamullah alayha. The tabarruk you give here at the Hussainia, or the tabarruk, or a glass of water you give for the love of Zahra salamullah alayha, you cannot calculate how this ends for you. और जहाँ पे एंड होता है वहाँ से शुरू होता है अहले बैत का. You have to understand that. और जो नहीं समझता इस बात को, they don't understand. Another example from the life of Rasulullah, man comes up to Risalat Ma'ab and he says, Ya Rasulullah, and he used to pray in the masjid, he used to pray Jama'at, he used to be with Rasulullah, sitting with him at all hours. He says, Rasulullah, I am very poor. So Rasulullah gives him a dirham here. Rasulullah says, here, take a dirham. Dinar is with gold and dirham is silver. So one silver coin is like, take this. So now in Arab that time they would go buy a few dates, go on another location and then sell those dates. या फिर कुआं खोदते थे, they would dig a well, get water and then sell the water. ये big business होता था. तो बहरहाल this man takes the one dirham and the barakah of Rasulullah's dirham is such that this man becomes a very, very wealthy and very rich man. Very wealthy and very rich man. Now he has farms and animals. So Rasulullah says, go to this person, tell him कि we need zakat. इसके zakat का साल पूरा हो गया, go ask him for the zakat. So he says, why should I give zakat? I've worked very hard for this. ये जो मेरे पास है, I've worked very hard. खुम्स में भी ये मसला होता है लोगों के साथ कि 1 करोड़ मैंने, मैं 20 लाख क्यों दे दूँ? मैं इसमें क्या करूँ, बोलेंगे ये अपनी बात कर रहे हैं. मैं इसको उतार के कह देता हूँ सरकार, भाई समझ के. बीबी का एक पैसा आपके पास नहीं होना चाहिए, ये आपका नहीं है, ये उनका है. जिस तरह भी आप उनको पहुंचाना समझें बेहतर, कुरान का हुक्म है खुब्स, बीबी का हक है खुब्स. समटाइम्स यू फील 1 करोड़ में से 20 लाख बड़ी अमाउंट लगती है. वो 1 करोड़ भी उनका है, वो 20 लाख भी उनके हैं, आप खुद भी उनके हैं. इसमें आप there's no us and you and them. It all belong. It is theirs. As soon as you feel मेरा है, I worked hard. जहाँ पे I आता है तो go back to the first ayat of Quran. शैतान. चलिए काम हो गया. So Rasulullah says, अच्छा ये कहा, this is what he said. He said, yes, I worked hard for it. Rasulullah says, call him. The man comes. Rasulullah says, जो मैंने तुम्हें दिरहम दिया था वापस करो. The dirham I gave you, give it back to me. And he says, 1 dirham से क्या होता है? He gives Rasulullah the money. 1 dirham वापस करता है. खत्म. Everything that came to him is gone. The barakah is not in the dirham. The barakah is in Muhammad and al-Muhammad alayhi salatu wasalam.
सल्लि अला मुहम्मद व आलि Muhammad wa ajil farajahum. The barakah comes from there. The rahmah comes from there. It may look small. It may look एक लगेगा ना, एक दिरहम से क्या चलेगा? कायनात चला दी अल्लाह ने, एक मोहम्मद से, एक अली से, एक फातिमा से, एक हसन से, एक हुसैन से। सलात भेज दो मोहम्मद वाले। When you're looking at this family, जब इस खानदान को देख रहे हो तो अदद पे मत जाइए। अल्लाह ने एक अता किया और कहा इन्ना अतैना कल कौसर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। Never feel anything you've done for the Ahlul Bayt is little. Never feel that way. एक कलाम या क़सीदा. Sometimes people ask, होता है ये, and take it as an advice. कभी होता है कि somebody wants to recite a Nawha, but he's not a good Nawha Khan. He may not be the best of Nawha Khans. Let him to recite the Nawha. क्योंकि जिस दिल से वो याद कर रहा है ना, हो सकता है सबकी बख्शिश उसके एक दिल की वजह से हो जाए। Dua is the same way. The dua is the same way. When somebody is reciting the dua, he wants to participate. Give him a chance. Let him to recite. Maybe his pronunciation of the word is not how it is supposed to be, but his sentiment is better than everybody sitting in this masjid. क्योंकि वो यहाँ से दुआ मांग रहा है, यहाँ से दुआ मांग रहा है। मिसाल के तौर पे दिस इज़ अ बुक कॉल्ड क़सस अल-उलमा। जब उलमा जब फारिग होते हैं कौम नजफ़ में पुराने ज़माने में, तो एक दूसरे के क़स्से लिखा करते थे, उनके साथ ये हुआ, फिर शाहिद लेके आते थे। तो वन ऑफ दी क़िस्सस दे रोट इज़ दिस कि वन ऑफ द मशाइख मीनिंग वन ऑफ द स्टूडेंट्स शेख, his child fell sick, so he went to the doctors, he went to different places. कहते इसका इलाज नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। So he says कि there is another student here, they say his dua is mustajab, ये दुआ करते कबूल होती है, why don't you go ask him to pray for your son? कहते हैं ठीक है। So he goes and he invites the person to his house and he says please एक दुआ पढ़ दें बच्चे के लिए। तो he picks up his hand and वो दुआ पढ़ते हैं। और because he was not a native Arab speaker, तो एक लहजा था, अब वो अपने अंदाज में दुआ पढ़ रहे हैं तो उनका काफ और काफ और ये सब इट्स ऑल गेटिंग मिक्स्ड अप, जितने मखालिज होंगे वो सब गलत हो रहे हैं। बच्चा ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो द नेक्स्ट डे द तालिब इल्म द स्टूडेंट गोज़ टू दिस ओल्ड मैन एंड सेज़ कि शुक्रिया बहुत बहुत आप, लेकिन आपकी जो दुआ है उसमें मखरज आपका गलत है। उसने घर जाओ तुम्हारा बेटा फिर बीमार हो गया। जो अल्लाह के मामलात होते हैं इसमें बोलना नहीं चाहिए। If a person has an individual connection with Allah subhanahu wa ta'ala, let him to maintain that individual connection with Allah subhanahu wa ta'ala. कौर अरम पे खड़े होकर कितनी देर अपने मौला से क्या बात करता है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अच्छा दिस इज़ अ डिस्क्लेमर एज ए मौलाना, आप उसको प्रोफेशन तो कहना बुरा लगता है, बट आई हैव टू रिमाइंड पीपल दिस। क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन चेम्बर्स होते हैं, इस्लाम में कन्फेशन चेम्बर्स नहीं होते। डू नॉट कॉल मी और एनी अदर मौलाना और एनी अदर आयतुल्ला टेलिंग देम मौलाना साहब भी गुनाह हो गया सरकार। अब कहेंगे अब तुमने अकेले तो तुम थे, अब गवाह भी तुमने बना दिया मुझे। शरअन इन द शरीया ऑफ अल्लाह एंड रसूल अल्लाह एंड आले रसूल इट इज़ हराम टू टेल पीपल अबाउट द गुनाह। 14 चेम्बर्स हैं कन्फेशन चेम्बर्स, दिल हल्का करना हो। 14 के कुछ ज़्यादा हैं, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ये अलम बाहर लगा हुआ। एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट, एनीथिंग यू वांट टू से, यहाँ जाके खड़े हो जाए, यहाँ दिल हल्का करें, क्योंकि आपकी इज़्ज़त भी महफूज रखेंगे, इज़्ज़त में इजाफा भी करेंगे, इज़्ज़त में इजाफे भी करेंगे, आपको और मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। क्यों? सही बात गलत जगह पे हो तो फ़ायदा नहीं होता, गलत बात भी सही जगह पे हो जाए तो कभी न कभी अजर और नतीजा मिल जाते। कम से कम इस काबिल तो समझा हमने और उन्होंने हमको। मैं अल्लाह के बस तौफीक
to be attached to this door of the Ahlul Bayt alayhi salatu salam. May we live by the words and the teachings of the Ahlul Bayt. When we die by the love and teachings of the Ahlul Bayt alayhi salatu salam. Inshallah, we'll speak more on Dua al-Kumayl and the many teachings that this dua has. But just the beginning is Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Just keep reminding yourself, oh Allah, I ask you, what is this dua is significant because on the 15th of Sha'ban, just the background and then we'll move to Masai. On the 15th of Sha'ban, Kumayl, a very close companion of Amir al-Mu'mineen, he sees Imam Ali on the night of 15th Sha'ban reciting a dua. He goes up to Imam Ali and he says, Mawla, what is this? Ye kya dua pad rahe hain aap? So the Imam says, come see me at a later time. Kumayl goes to the Imam and he says, this is the dua of Khidr alayhi salatu salam. This is the dua of Khidr alayhi salatu salam. इसका मतलब पता है क्या होता है? इमाम ने कहा खिज़र ने मुझे दी है। ये दुआ खिज़र के पास भी है। Pick up the riwayat, pick up history. Pick up riwayat, pick up history. When Imam Ali left this world, मौलाए कायनात का गुस्ल हो रहा था, सबसे पहले ताज़ियत करने वाला, आप 21 रमज़ान को आप दुआ पढ़ें, मफाती खोलें, ज़ियारत इमाम अली अलैहिस्सलाम, सबसे पहली ज़ियारत जो इमाम अली की हज़रत खज़र ने की। इमाम अली और खज़र का रिश्ता अल्लाह मूसा जिसके पास भेजे वो खज़र जिसके पास भेजे वो अली इब्न अबी तालिब। So then the Imam says, Kumayl, try and recite this every Thursday night. हर शब जुमा को उसको पढ़ो, दुआ कुमैल को. If you can't, at least once a month. If you cannot, at least once a year, 15th Sha'ban. And if you cannot, once in your lifetime. इसको ज़रूर पढ़ना, दुआ को. And this dua of Imam Ali alayhi salatu salam, this dua Kumayl, inshallah, we'll speak more about this dua. It teaches you and it activates within you and it codifies within you your connection with Allah subhanahu wa ta'ala through the Alavid paradigm. अब आप अल्लाह से बात नहीं कर रहे और आपके हर दुआ में अली की आमीन साथ शामिल है। जब उस्ताद आपको तैयारी कराता है तो इम्तिहान में आप अकेले थोड़ी बैठते हैं, आपकी उस्ताद आपकी तालीमात के साथ साथ बैठता है। तो नवाब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने taught you this दुआ, अब अलवी रंग में दुआ कैसे मांगते हैं, there is दुआ कुमैल। इंशाअल्लाह इस पर कभी गुफ्तगू होगी। कुमैल बिन ज़ियाद, then Kumayl, the Sahabi of Imam Ali अलैहिस्सलाम, suffered what everybody suffers for the love of Imam Ali. जो कीमत है मोहब्बत इमाम अली की, वही कीमत कुमैल ने चुकाई। 14 years he was with Rasulullah, and then with Imam Ali, and then with Imam Hassan. फिर हज्जाज इब्न यूसुफ तक़वी लानतुल्लाहि अलैहि व उम्मिही calls Kumayl at the age of 90, he's approaching. Very aged person, very aged person. First he comes, he looks for Kumayl. Kumayl says, I have no work with this person. मुझे से कोई काम नहीं है. But then, because of reasons, when Hazrat Kumayl realizes that this is my time, this is the time Imam Ali promised me, he goes to Hajjaj and they have a conversation mentioned in history. How much of a threat is a 90-year-old man? A 90-year-old man कितनी बड़ी threat हो सकता है? अली वाला होना तो हो सकता है. And he recognizes कि अली वाला है. तो he sliced his head off. खुदा अली वालों को, अली से मोहब्बत करने वालों को, अली को चाहने वालों को, अली का नाम लेने वालों को दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं,
अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और खुश सआदत उन भाइयों की पाठशाला में जो इस दुनिया से चले गए तो वहाँ चले गए, मौला के पास चले गए, और किस शान से गए होंगे। कम से कम ऐसा तो चेहरा हो कि बीबी को दिखा सकें कि बीबी इसी रास्ते पे चलते हुए आए हैं, आपकी मोहब्बत में आए। नाम लेके हमें नाम देख के मारा जाता ना अब तो खुश सआदत उन अफराद के। और खुदा जो समझता है आमीन कहे, खुदा हमें भी ऐसी शहादत नसीब करे कि कम से कम सैयदा को चेहरा दिखाने वाला हो, वरना क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का और कैसी ऐसी मौत। लेकिन जो बच्चे उनके हैं पाठशाला में, जो बच्चियां हैं, जो अयताम हैं, जो ऑर्फन्स हैं, वो अपनी दुआ में उनको याद रखें, उनकी सलामती के लिए दुआ करें, सदका दें। और अगर कुछ अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है तो उनकी मदद करें, उन तक पहुँचाएँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं। बड़ी तौफीक है, इट इज़ अ बिग ब्लेसिंग कि इस तरह से दुनिया से जाएं कि दुनिया रश करे। बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे तरीक़े होते हैं, बहुत सारे अंदाज़ होते हैं करने के। मैं पहले बता चुका हूँ। मैदानी करबला अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि हर मुसीबत जो करबला के मैदान में पड़ी है, इसको बहुत शबाहत है और उस हर मुसीबत से जो मदीने में एक गली में एक रात में बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर टूटी। बहुत सारी शबाहतें हैं। मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कुछ मसाइब ऐसे हैं जो मैं नहीं पढ़ सकता, वो अदब के ख़िलाफ़ हैं। पढ़ना अदब के ख़िलाफ़ लगता है सरकार। जो गुज़र गई और जिसने किया वो लानतुल्लाह अलैह कितना बेअदब था। सिर्फ एक मैं बात चाहूँगा कि मसाइब हैं, शब जुमा है, खुदा आपके अमवात की मरहमत फरमाए, कुछ आंसू निकल आए, इस बात को महसूस कीजिएगा। हर मुसीबत जो करबला में हुई है वो मैक्रो है उस माइक्रो का जो मदीने में हुई थी। चाहे वो आग का लगना हो, ताजियानों को बरसना हो, तमाचा लगना हो, चादर की बेहुरमती हो, गले में रस्सियाँ डालना हो, लाशों को पामाल करना हो। आखिरी बात, हत्ता के हज़रत अली असग़र का मैदान में आना और तीर का खा लेना और मुस्कुराना ये बताता है कि असग़र ने खुद नहीं किया, उसका एक चचा है मोहसिन, यहाँ तीर था, वहाँ दरवाजे में पेवस्त एक बीख थी, जिसे सैयदा को इस तरह से ज़ख्मी कर दिया कि इमाम अली शिकायत करते नजर आते हैं कि ज़हरा ने मुझसे छुपाया, मुझे पता है। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू व यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि मातम या हुसैन या हुसैन या हुसैन।